दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं क्रंकर.io। मतलब पता नहीं हम क्यों खेल रहे हैं, पर लोडे ने कल नहीं करी स्ट्रीम। दोस्तों कल मैं स्ट्रीम नहीं कर पाया दोस्तों, कल मैं फोन पे था, मैं बिजी था काफी। यस माफी। ओ ये लोड ना हो रहा है, वो मुझे समझ रही आ रहा है। 12 हेडशॉट्स खाएंगे आज हम दोस्तों, बैकशॉट्स के साथ। मेरा लोड नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं? मेरे लोडे पे आज चश्मे वाले जोक क्यों मार रहा हूँ? अरे छोड़ इसको, छोड़ हम खेलते हैं। तो गया एक मैच करने दे मुझे, मेरी कर ले, मैं तेरी स्ट्रीम देख लूंगा। हाँ स्क्रीन शेयर देख ले। हाँ वो ये हवा में क्यों? यूट्यूब स्ट्रीम देखता हूँ। नहीं वो डिले पे होती है। और तेरा नाम है जीरा, मेरा नाम है सांडू और चक्कू का नाम है चक्कू। लोडे का फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी ने कोई ना दिखता। मेरे को पड़ता है। और स्ट्रीम पे 60 FPS पे देख पाऊंगा, स्ट्रीम पे मैं यार 30 में दिखता। वो तो किल कर गया, किल कर गया। भैया रोस्टेड टोस्टर ने मुझे मार दिया। आगे भी बढ़ता है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आज स्ट्रीम पे शोडाउन खेलते हैं, अपने फ्यूचर सेल्स को दिखाएंगे मैं कितना ऑब्सेस्ड था शोडाउन से। ये वही मुझे दे दूंगा। सब खेल ली। पेज़ान डीपीटी सर्च करा तूने? सांडी पीटी पेज़ान डीपीटी ए जांडी पीटी क्या स्पेलिंग? पेज़ान FEZANDIPITI। स्ट्रीम पे दिखा मैं। हाँ बता FEFEZAN हाँ FEZANDIPI मिल गया। फिर पोकीमोन है जो मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। पता था मेरे को। जांडी पीटी पॉइजन और फेरी, क्या करूं अब मैं इसका? कुछ भी नहीं, वो नाम नया लग गया, मैं ज्यादा बता दी। अब आया जेन 9 का है 100%। यस लेट जेन 9 का मेल है ये तो, DLC में आया था। मेल है 100%। लगता फीमेल है, फीमेल होना चाहिए था। मैं तेरे को कुछ अच्छे से एक बार शक्ल खोल के देख, शक्ल का स्टैट्स देख ली मैंने, देखे हुए हैं। देख लिया भाई, ठीक है। गंदा है। टेस्ट का बोर्ड कर दिया ना। यस हाँ भाई, ये वो टाइम चल रहा है जब ये मोटा उसको डॉक्टर को और रोज 12 बार फोन कर रहा है, वो इसका रिप्लाई नहीं दे रही, इतना डेस्परेट है ये। 4 साल बाद देखते हैं तो क्या कहता है सुन के। क्या पता क्या वो चार्ज करेगा, क्या पता मैं जिंदा हो गाना, क्या पता मैं 3rd ईयर में लटक जाऊं। क्या फैंटास्मा ने मार दिया। सही बताऊं भाई, अगर आज भी कुछ इंटरेस्ट ही नहीं कराना, हमारा
भी नींद आ जाएगी। तो हाँ भाई, तो कल मैं इन सब बात करता करता सो गया था भाई, 4 साल बाद वाले हो गए, स्ट्रीम नहीं करी हमने ये बात करी उसके बाद की, पैड़े में। हमने ये बात करी कि अमेरिका में कैसे बात बंदूकें चल के उड़, रही थी, बात मेरे हाथ में। ये मुझे भी नहीं पता। हम ये बात बात कर चल रहे के थे रही कि थी, मैंने नो यार। अमेरिका के स्कूलों में लोग बंदूक लेके बच्चे उड़ा देते हैं, ये बात करी। अब मैं तुझे क्या दिख, मुझे असाइनमेंट बनवानी है, 4 साल मत की बात है तो। सांडू, इसका जीवन में कुछ काम हो तो बताइए। सिवाय सिवाय क्या पता हम यादों के तरीके से देख रहे हो, तू मर गया हो, इन वीडियोस को हम यादों में देख रहे हो, हे 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 हे। हो सकता है ऐसा। या फिर मैं मर गया हूँ, तुम लोग देखते हो। क्या बता, अगर भाई तू मैं मर मर गया चुका हूँ तो भाई और हम बस, देखते हैं। मेरे 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 दोस्तों, मैं मर चुका हूँ तो भाई बस तुम राजी रहो भाई, और हंसना मत बस मेरे हे हे ऊपर। हे। अरे मैं मर चुका हूँ तो 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 क्या ही तेरी होगा, तुम कर सकते हो, क्रेजी बॉडी बात के है। साथ तुम दुष्कर्म करूंगा मैं तेरे बॉडी के साथ। कर भी लो, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, पर उससे मैं तो मर चुका हूँ ना, समझ रहा है। दुष्कर्म कर दूंगा। कर भी देगा तो मुझे फर्क थोड़ी पड़ रहा है, समझ रहा है। देख भाई, लेकिन गवर्नमेंट को पड़ रहा है भाई, कितनी प्यार करते हैं गवर्नमेंट से। क्यों पढ़, अच्छा सही बात है भाई, इलीगल क्यों है ये चीज। हाँ 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 हाँ। यार कितनी भाई इन दुआओं भाई जलाया करे ना कि दबाया करे, तो समझ जाए तू, कोई तेरी बॉडी निकाल कर वो ना कर, जला दूंगा मैं। ये भाई, तू थोड़ी जलाओगा, मेरे घर वाले जलाएंगे। कौन है तेरे खराड़ा? स्ट्रीम पर रिवील नहीं कर सकते ऐसे। हाँ, और वो भी करते हैं हम, चश्मा कह रहा था ना, वायरल क्लिप्स अपलोड करते हैं रील्स पे, असली में वायरल करते हैं। करना चाहता हूँ मैं, किसी ना किसी वे में तो सपना पूरा हो। यस, तूने इंस्टाग्राम खोल लिया तूने? हाँ, कौन सा कलर। क्या करना है? ये स्ट्रीम पे दिख रहा है जो मैं कर रहा हूँ। आई डोंट नो, देख नहीं रहा हूँ मैं। क्योंकि स्ट्रीम पे डिस्कॉर्ड नहीं दिख रहा दोस्तों, डिस्प्ले कैप्चर करके दिख, देख लो भाई, क्या ही देखोगे। ये जो मैं ये कर रही हूँ, इसका मेरी जिंदगी में कभी कुछ महत्व नहीं होगा, पर करना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए हमारा भारत जुदा पड़ा है दोस्तों। दोस्तों पर हम कंप्लेन नहीं कर सकते, देश बदलेंगे, डरते हैं क्या। देश बदल दूंगा बेटे, बेटे देश बदल दूंगा। शोडाउन खेलेगा? देश बदलना, हमें तो शोडाउन की बात कर रहा है। अरे देश में पोकेमोन की वेव लाते हैं हम, फिर शोडाउन खेलेंगे। सही में हम ये जो गेम में खेल रहे हैं, ये पता ही नहीं होगी किसी को, शोडाउन क्रंकर की। यस। क्रेजी बात है भाई। शोडाउन में मना, आज तक एक इंडियन बंदा नहीं पा लिया मैंने शोडाउन में खेलते यार। हमेशा हिंदी में बात करने की ट्राई करूँ मैं, फिर कोई पाता ही नहीं इंडियन बंदा एक भी। समझ रहा हूँ। एक्चुअली रिस्पॉन्ड भी बहुत कम लोग करें, लाइक मैं चैट करूँ तो रिस्पॉन्ड भी ना करते।
फ्रेंडली होने की कोशिश करता हूँ मैं। इतना फ्रेंडली भी मत हो। तेरी मम्मी के साथ बहन के थोड़े गान मार दूंगा। खेलेगा? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जाना चाहता मैं भी इसमें। नहीं खेलता। मैंने तो फोन पे खेलना। क्या नहीं करना चाहता तू? वेव नहीं लाना चाहता शोडा की। इतनी तेरे खेलने वे आओगी लोड़े। कुछ है तू? कैसी बात है। हाँ, पर बात यह है मेरा भी जी ना करे खेलने का, क्योंकि तू खेल रहा है तो फिर सीरियस ना खेलता डंगता तो क्या फायदा। यस, सही कह रहा है तू। लक्ष्मी ये खेल और सीरियस खेल ही पे आजा। के बंदा है भाई तू। तेरे तेरी यूनिवर्सिटी में पूछ ले कोई पोकेमोन खेलता हो तो तेरी नहीं यूनिवर्सिटी में मैंने शोडाउन को है तेरा। पोकेमोन की नॉलेज आड़ा भी कोई बंदा नहीं। अब कोशिश करी थी मैंने पूछने की। छी भाई। बस ये एक दो ही हैं जिन ये भी जिनको मतलब वो भी आती है, मतलब पायरेसी और गेमिंग और कंप्यूटर की नॉलेज। वो भी एक दो ही है बस। मेरे को है। रायन और कुनास्ट है बेसिकली। ये नाम नहीं वैसे लेना मेरे चाहिए को था। है। है तुझे। थैंक यू। सही मेरे यार क्रेजी बंदा है। मतलब रैन। टेक्निकली तो। हम्म। रैन है उसका नाम बाय द वे। सही कह नो रहा तू काय करने क्यों करे काय करता। है। उसको मतलब सब चिढ़ा के रयान कहते हैं तो वही बैठ गया है ना। बेचारा इतना बढ़िया नाम तेरा कर क्या ना चाहिए रेहान रेहान को है सब। इससे तो वही उसको हम चक्कू कहते हैं। चश्मा तो चश्मा है। और ये बैंड का लोड़ा मास्टर कह रहा है कि मतलब 12 फॉन्ट रखो। 12 में क्या बढ़ता है। माने 12 फॉन्ट साइज मैंने 26 27 28 रख रखा था। फॉन्ट साइज उसने स्पेसिफाइड फाई करके लिख बताया कि ये फॉन्ट साइज होना चाहिए तुम्हारे डॉक्यूमेंट का। या के बात है। हाँ। उसके कंप्यूटर का हाँ मैं बताता हूँ उसके कंप्यूटर का जो रेशियो है वो 150 या 200% होगा लाइक समझा ना तू। 100% में नॉर्मल होगा नहीं मतलब। मैं समझ बताता हूँ जाता वो बेसिकली मतलब ये बेसिकली नहीं चाहता जूम कि। इन इन होगी उसकी स्क्रीन। नहीं मैं बताता हूँ वो ये बेसिकली। बूढ़े लोग क्यों आया करे। वो बेसिकली चाहता है कि ज्यादा बड़ी पीडीएफ ना बने, क्योंकि मैं 2000 वर्ड्स तो करने ही है। ठीक है तो ये चाहता है। भाई भाई मेरी मेरी बात सुन एक बार। हाँ। फॉन्ट साइज पे लोडे का फर्क नहीं पड़े पीडीएफ के साइज पे वो सही बड़ी बताऊं मैं। के ये जी है चौधी। बैंड के लोडे 1-2 MB का फर्क पड़ेगा। मैं दलाल पेज कहूँ मैं कितने पेज वो साइज नहीं एमबी में साइज नहीं कह रहा दलाल। पेज कह रहा हूँ। पीडीएफ के पेज। क्या ही फर्क पड़ता है उससे। मेरी 30 पेज जो की थी 13 की हो चुकी है। लिखा है तो लिटरली अपने हाथ आता है। नहीं असाइनमेंट वगैरह इतने एमएस वर्ड पे। ये लिखो तू 2000 वर्ड का के MS वर्ड का के। ईवीएस सब्जेक्ट है हमारा। पता नहीं मुझे क्यों है तो क्या सब्जेक्ट। होता है उसमें? उसमें हमें इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं। अरे लोड़े तो लिखना मतलब क्या है 2-4 शब्द बता तक अच्छी होती है। रहा टॉपिक दिया है हर बच्चे को अलग अलग। मेरा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन। ठीक है।
तो उस पे मुझे लिखना है, तो मैंने वो ए 4-5 एआई यूज करके लिख लिया कुछ ना कुछ। तो एक एआई से पहले मैंने इंफॉर्मेशन निकलवाई, फिर उस इंफॉर्मेशन को दूसरे एआई में डाल के कहा कि सिनोनिम्स बदल दे कि प्लेजरिज्म ना हो। फिर मैंने तीसरे एआई को कहा कि लैंग्वेज बदल दे ताकि प्लेजरिज्म ना हो। तो पर अभी भी थोड़ा बहुत होता है मेरा। कितना परसेंट है? 30। काफी, बहुत 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 ज्यादा है भाई, 30%। हाँ देखते रिजेक्ट मार देंगे। हाँ। एक या दो या घने तगड़ा 3-4% नहीं होना भाई, चाहिए। नहीं इतना भी नहीं भाई, 15। इतना ही होया करे ना भाई, 15 भी बहुत ज्यादा है भाई, निकाल दिया करे 15 में। पागल है तू। क्या रखा है उसने, क्या रखा है 15 तक चलेगा? दलाल है तू भी, हे, ओवर हे, जा इतना बताओ बहस कर रहा, बताओ जान के लोग। डरावा, जान के डरावा अरे अब तू अरे भी। वो तू भी अरे नॉर्मली इतना। ना भाई, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो को नहीं चला करता 15। नहीं भाई चलता इतना है। मेरे। अरे यू बताओ है टीचर की इतना इतना परसेंट हो सके है। थोड़ा कुछ तो चूतिया है बच्चा ने, ज्ञान दे हुआ है कि हमने कोई जरूरत नहीं है खुद पे लिखण की, बस इसने कम वो कर लो। ठीक है, खुद कोई चुप है। लिख भी कैसे सकता है बिना इंफॉर्मेशन के? हाँ तो फिर रिसर्च वैसा तो टॉपिक दे करनी भाई, क्या पड़ती है, चुतिया। रिसर्च तो करनी पड़ती है कोई सा भी टॉपिक हो। तेरी मम्मी पे सर्च कर लूंगा मैं। पूछो बकदे है। आजा। कौन? सॉरी सॉरी भाई। पुनाश्त। कोई तो है। पुनाश्त है। नहीं भी इसका बना ली जीडी की। नहीं। दे दे फोटो खींचने भेज भाई। नहीं सुन रहा था। आने तो चलते हैं। खोल के भी देखी मैं, खोल के भी देखी थी। पड़ेगी पर किसको भेज। एसएसडी मिल सकती है। भैया बोलती है किसको? आयुषा। आयुषा वहाँ भी करता है। सलाम। हाँ? सलाम बाद में मना की भी क्या? हाँ। कौन सी गेम? फोर्जा। सही है। हाँ, ले जाएंगे। हाँ अभी बस 10 और या 20 मिनट। हेलो। हेलो। दोस्तों, I'm back. Baby, I'm back. Na, 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 na. Wish I could go back to the way it used to be, to the way it used to be. हेलो। आई लव यू। एग्जिस्ट करता है क्या तू? अब मुझे क्या करना था, मुझे ये करना था। कहाँ पे था, कहाँ पे था? डिस्कनेक्ट टू फिश। कुछ ऐसा कर लेना जिसमें दोनों इंटरेस्ट ले सके। दोनों इंटरेस्ट ले सका, हम वो गेम खेल सकते हैं। एक सही बताऊं तो छोड़ यार, नींद आ रही है, मैंने सोता हूँ मैं। ओके भाई, सो जा फिर।
मैं अकेला गेम क्यों भी नहीं आता ना, गेम नहीं खेलेगा लोड़े, इकट्ठा खेलेंगे। ये वही इतने दिनों का रुका हूँ। हाँ तो मैं रोज कहूँ ना, रोज तू खेलता नहीं, कब आज कहता मैंने है तो तू? रोज कब कहता है? छुट्टी है, रोज कह लूँ मैं, परसों भी कही थी मैंने, कल तो कौन कही। मुझे नहीं याद। ओके, अब सो रहा है तू? बाय बाय। अच्छा रे। जैमिना आई काम गया मेरा जी। ये तो भाई, और सुन, हाँ, इतनी कैसे नींद आ गई तुझे? मेरा नहीं नींद आ रही आज। मैं कहूँ हाँ, चश्मा हो तो स्ट्रीम कर लिए तो रिकॉर्ड हो जाएगी, मैं बाद में सुन लूंगा। वो नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। डॉक्टर, वो तो मैंने भी ना डालता किया हो। डॉक्टर चाहिए मुझे। डॉक्टर, इसको तू नहीं चाहिए। अरे तो भाई, डॉक्टर, इमेजिन तेरी फ्यूचर फ्यूचर गर्लफ्रेंड देखती हो भाई, इसमें कितना बुरा फील होगा उसमें, अच्छी भाई। डॉक्टर, डॉक्टर। और लोड़े शर्म कर ले अपनी गर्लफ्रेंड की तो कम से कम। फ्यूचर गर्लफ्रेंड बेटी टोचन दे दूंगा। ये ब्रेकअप होगा तेरा। सही में वैसे। इमेजिन भाई इस तेरे, बात भाई की इमेजिन ये कर स्ट्रीम उसने देखी तेरे और लड़ाई ब्रेकअप होगी का, हमारी, इमेजिन कर। और फिर तू भाई सुलझा तेरे रहा है। ब्रेकअप का रीजन भाई, तेरी 4 साल पुरानी एक स्ट्रीम होती जो तेरा टाइम पास में कह दी थी भाई, कसुत की बात हो। पर नहीं, अगर हो ही तो मेरी अच्छी हो तो, मतलब इतनी छोटी बात पे थोड़ी वो इतना होगी। ये तो बस कहने के लिए कह रहा है, अभी तो तू डॉक्टर सीन पे पूरा बड़ा। फ्यूचर गर्लफ्रेंड बेटी टोचन दे दूंगा। डॉक्टर चाहिए मुझे, चाहिए नहीं तेरा पता मतलब। नहीं डॉक्टर एक तो होगा। तू फ्रेज गलत करवा दे, चाहिए थोड़ी मुझे वैसे, मतलब वैसे। वैसे क्या डॉक्टर हो वैसे? जाए कुछ गर्लफ्रेंड बस करिए। चाहिए नहीं मुझे डॉक्टर, मुझे बात करनी है, कई दिन हो गए। मैं मैसेज करा था इंस्टा पर, फिर रिप्लाई नहीं। डिग्रेडेशन। मैं सी कर सकता हूँ इस समय, ये बकचोदी करना अरे मैं चाहिए। ब्लॉक कर दिया मैं तो हाँ वो करना, मुझे इंस्टा। मुझे ब्लॉक कर, तू देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ, ब्लॉक नहीं किया मैं, नहीं ब्लॉक नहीं किया मैं, गो अवे लिख रखा है अपने बायो में। बायो में? मतलब तुझे लिखा है कि बायो में? नहीं, बायो में लोड़े। बायो में तो सबके लिए लिखा ना। हाँ तो मुझे थोड़ी लिखा है। ओके। चल जाए रहा हूँ मैं भाई। अरे 11:30 हुए, एक तो पहले नींद क्यों करा गया मैंने, वही तो कह रहा था मैं। पता नहीं क्या हुआ। सी। कित गया तू। हूँ वही में। हाँ, सो जा फिर। कर दिया ब्लॉक। एंड वर्ड किस पे किया है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। कांटेक्ट था जब पे कम्युनिटी। क्या करूँ ये फिर? अब वेट कर, मैं फोन मिला के देखता हूँ तुझे। कौन से मिलाइए फोन? किससे मिलाऊं? कौन से फोन मिलाइयो? फोन से फोन मिला। और किससे मिलाऊंगा भाई, मैं किधर डालूं? रिंग जा रही है।
मिलाया ही नहीं अभी मैंने। कहाँ था ये हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरिंग लैंड, ओ पायलट नहीं, क्लियरिंग लैंड, स्ट्रेटेजी। लोड़े मिला हुआ कि मैं कर दूं अनब्लॉक। एक सेकंड, एक सेकंड। एक 3 सेकंड। एक दो तीन। हाँ मिल रहा है, रुक मिल रहा है। रिंग जा रही है रिंग। रिंगा रिंगा रोज, पैकेट फुल ऑफ पैसा पैसा, के और फोर डाउन हो। के बोका चूतिए फोन मिला है नहीं पता। नहीं मिला था इसलिए टाइम पास कर रहा था, अब मिला है। रिंग अभी तक तो नहीं गई। स्टिकर पे डाल दे। स्पीकर पे ही है। हाँ गई। ओ ओ ओ, ओ मतलब ब्लॉक कर रखा डॉक्टर ने मुझे। हाँ ओ ओ तो तू कितने ही मिला ले लोड़ा फर्क नहीं पड़ता उसको। ओ, क्रीम दिखेंगे भी नहीं हाउस कभी। गया थी वो इतना तो। अब छोड़ दे डिल्यूजन रोज की रोज 10-12 फोन मिलाना। अपनी जिंदगी पे ध्यान दे ले बेटे पीछे कमा ले। अब ना तो ये 4 साल बाद वाला जो मिजरेबल स्टेट में है ना नो हो जाएगा तू अपना ये फ्यूचर प्रिवेंट करना है तो ना तो पढ़ ले बेटे, भाई। 4 साल वाले अगर तुम मिजरेबल स्टेट में या फिर भी डरते नहीं या बेटे, टॉर्चर दे देंगे दुनिया को। सॉरी भाई, सॉरी भाई। तेरा 4 साल वाला सोचता है और कितना चूत गया था वो 4 साल सही में। पहले। सॉरी भाई। ना ऑर्गेनाइज पूरा। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, इसकी जगह। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम फोन पे मिलाते हैं, इस पे तो ब्लॉक नहीं किया होगा, नॉर्मल कॉल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया। यस ब्लॉक है तू। ब्लॉक है। वेस्ट ब्लॉक पैक। क्यों उसने मतलब मेरा नाम सर्च करके ब्लॉक किया मुझे स्पेशली। क्रेजी लोग यस रहते हैं दुनिया में। इतना तो मैं फोन में नहीं मिलाता कि स्पेशली नाम ढूंढ के ब्लॉक मारे। भाई दिक्कत फोन से नहीं इंसान से होती है समझ जा। वैसे दोस्तों दोस्तों, स्ट्रीम वाले दोस्तों जिनको नहीं पता, ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं एक रैंडम लड़की को फोन करके परेशान करूं दोस्तों। ये ऐसा ही है। ये ये दोस्त है हमारी, काइंड ऑफ, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब है बस। भाई मेरी तो है भाई खास है मेरी तो। हम दोनों की तेरी खास होगी है, पर काइंड ऑफ। हम दोनों तेरी की होगी भाई काइंड ऑफ तो। खास है, पर ये बदल जाती है, समझ, मतलब बदल जाती है हाँ हाँ इसलिए। ये हम मानते हैं लेकिन ये नहीं मानती। नहीं, ये भी मानती है, मतलब काइंड नहीं ऑफ। ये नहीं मानती। ये 2 दिन के लिए मानती है फिर तीसरे दिन दुश्मन मान लेती है फिर ये 5वें दिन दोस्त मानती है फिर 7वें दिन दोबारा दुश्मन मान लेती है ये सिस्टम है इसका।
हम काफी गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन है तो यही। नहीं, हमें दोस्त मानती है, पर वो कैसे एक्सप्लेन करें, सही में क्रेजी बात। मैंने कर तो दिया। हमें मतलब हम तीनों एक दूसरे को दोस्त मानते हैं, पर वो ना वो वैसी हो जाती है कि कैसी हो जाती है कि मैं पढ़ूंगी ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, पढ़ूंगी मैं ये बस। दुनिया पिछली। हाँ, तो वैसे मूड में चली जाती है वो, फिर 2 दिन बाद रोती रोती आ जाती है। ये वैसे उसने देख ली तो वो हमेशा के लिए ब्रोक हो जाएंगे। सॉरी भाई। सही में वैसे ना गंदा देख, सिस्टम है मैं तो तुमने दोस्त बनाया। मानता हूँ भाई। मैं तो ऑब्वियसली मानता हूँ। क्या तो तू क्या है? मैं बोले। मैं अच्छा इंसान हूँ। आज मैंने एक वेबसाइट देखी थी, बताऊँ तेरे? नहीं। ओके। हे हे। स्टूडेंट खेलेगा। तू तो सोया था ना। अरे मैं नींद खुल गई टाइम देख कर, तो मैं 64 11 हुए हैं। नींद क्यों कराएगी मैंने? इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन रिजर्वोयर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन, यहीं तक था ना, चलो प्लीज। अरे और भी है, जमीन है। पेस्ट करना इसको, इंटीग्रेटेड। चैट भेजी एक बंदे ने, चैट भेजी। यूट्यूब पे देख। रुक जा, रुक जा, बंदे ने चैट भेजी, एक बंदे पहन के लोड़े, काम धंधा कर ले जीवन में, यहाँ बैठा है रैंडम 2 लोगों की बातें सुनता। भेजी है चैट। तू नहीं भेजी होगी। मैं नहीं हूँ। बस मेरा लास्ट पैरा रह गया, देखता हूँ उसके बाद। वो कुशल बैठे की रिक्वेस्ट है मेरे पे। मेरे पास भी। मैं तो फोन नहीं करी। मैंने तो कर ली। तेरा तो फेवरेट था। वैसे ये दुनिया मेरे टैब्स देख रही होगी, क्या क्या खुला है। दुनिया पैन की थोड़ी, तुम्हें जहाँ पर ये दुनिया। गाना सुनाता हूँ मैं क्रेजी यार तुझे। एक तो बहन चोद, मेरी इतने नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं, देख तू एक बार। मैं बड़ा भूल गया तेरी बात। तू देख मत तू। देखा करना इंस्टा इतना। स्क्रीन शेयर का हो गया है। स्क्रीन शेयर। चेक करना जरा, चेक पिक्चर बंद कर ले। फैन के लोड़े, ये हमारी स्ट्रीम का व्यूअर रिटेंशन घटा दिया, ये चीज समझ रहा है।
ये अरे चेक तो ये क्यों नहीं देख कर रहा मेरी प्लेजरिज्म? इनकॉग्निटो में घुस जा। स्क्रीन दिखा है, स्क्रीन दिखा है मेरी स्क्रीन। मैं देख नहीं रहा, रुक जा, काम कर। स्क्रीन पे भी दिखा नहीं है, रुक जा, भी कुछ मत कर। और क्या करना था? एक और चीज बोली थी तूने। चैट आ रही है। चैट। चलो ये स्कैन कर रहा है, इतने चैट देखते हैं। चैट कहाँ आती थी? डॉक्स, सीन्स, कंट्रोल, स्टैट्स, यूट्यूब, चैट। मुझे तो नहीं दिखा रहा। ऑफिशियल पे भेजी देख। थी, ऑफिशियल पे देखनी पड़ेगी। ऑफिशियल पे भेजी तो देखनी थी। पड़ेगी, ऑफिशियल पे। ओबीएस पे नहीं दिखा रहा, तो चैनल पे जाके देखनी पड़ेगी। नहीं, वही नहीं दिखा रहा, कौन नहीं आई? आई थी भाई। 40 मिनट की हो गया इसकी शीट पे। अरे छोड़ इसको, शो डाउन खेलते हैं। हो गया एक मैच, करने दे मुझे। नहीं पीती क्या स्पेलिंग? प्लीज अब देखते हैं तो क्या कहता है ये सुन के। क्या पता क्या विचार करेगा। क्या पता मैं जिंदा बेकार हूँ। क्या पता मैं थर्ड ईयर में लटक जाऊं। मेरी आवाज कैसी आ रही है वैसे? महंगी सी आवाज आ रही है मेरी। ना सही है। और लाइव पर दबाओगा जब चैट दिखेगी, लाइव पर दबा। एक चैट। और आई है, देख देख देख। चैट बिना लाइव पे दबाए भी दिखती है, और मैंने लाइव पे मतलब दबाया भी ना नहीं। सही है। फिर तो कुछ दिक्कत है भाई तेरी चैट में। और लाइव पर दबाओगा जब चैट दिखेगी, अरे लाइव पर दबा। हाँ, दिखी दिखी दिखी। दिखी दिखी दिखी। सेक्सम सेक्स सेक्सम सेक्स कह रहा है एक बंदा। क्या करें हम इसको? मॉडरेटर बनाते हैं या टाइम आउट देते हैं? टाइम आउट देते हैं। टाइम आउट दे दिया। बेटा बेटा इस एडमिन का अकाउंट डिलीट हो गया। जो हैकर है ये। क्या पता, आईडी पासवर्ड पता लगा ले तेरे यूट्यूब अकाउंट का। देखो दोस्तों, इसको टाइम आउट दे दिया मैंने। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों। देखता हूँ, मेरे को कभी मिला नहीं टाइम आउट, कैसा एक्सपीरियंस होता है। मेरे को मिला हुआ है। क्यों भाई की हरकत कर दी थी तूने? अरे कई चैनलों के महंगे महंगे रूल्स हो गए। कुछ मतलब एल उल भी ऐसा नहीं, भी नहीं लिख सकते। नहीं कुछ अच्छा ओ, यू हैव बीन प्लेस्ड इन टाइम आउट बाय द ओनर। मॉडरेटर भी बना सकता हूँ मैं तुझे। फिर तू बाकी बना लोगों दे फिर लौड़े। फिर तू बाकी लोगों को टाइम आउट दे सकेगा। बना दे बना दे। नहीं नहीं। फर्स्ट पाकिस्तानी इन टॉप 10, ओ माय गॉड। के रैंक पुश कर रहा है कोई बंदा, को, रेड करते हैं इसको। लौड़े को कॉपीराइट भी आ जाएगा। नहीं आता। हाँ, गाने पे नहीं चला सकते हम, गाने पे तो आएगा। बंद कर दे, छोड़। खाम खाम स्ट्रीम और गायब हो जाएगी। वो नहीं होती भाई, लाइव स्ट्रीम देखना एक बंदे की, वो पबजी खेल रहा है, आईपैड पे खेल रहा है शायद से। चल मैं जाऊँ, तू स्ट्रीम कर सोचिए। कर कार के ओके, एकला मैं के स्ट्रीम पर। चल जाऊँ मैं फिर, शोडाउन खेलता हो तो बता। शो डाउन। शो। बता, नहीं। नहीं खेलता तो जाऊँ। नहीं खेलता। नहीं खेलता।
तेरी मॉम भी खेल लेगी। बाय बाय। तेरी मॉम भी खेल लेगी। चल जाओ मैं, गुड नाइट। हाँ, वेरी गुड, बाय बाय। गुड नाइट बोल लो रे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। यस। 3 2 1। दोस्तों, ये गया शायद से तो जीरा। तो हम इतने प्लेजरिज्म देखते हैं, गया नहीं क्या? गया गया। इतने हम प्लेजरिज्म देखते हैं अपना कितना डिस्प्ले को डिस्प्ले कैप्चर देखो दोस्तों। ये फुल स्क्रीन पे क्यों नहीं है वैसे? क्या करना था हमें? हम यहाँ से दोस्तों, ये 72% ये टैग कर रहा है, 72%, 76% इसका वेट करते हैं। दोस्तों इसने बस 4% प्लेजरिज्म बताया, मतलब वी आर फाइन दोस्तों। और ये भी 2 लाइन और बताया, दिस crucial for plant growth. Furthermore, the chemicals used in the mining process इंट्रो में है, ये हम खुद भी बदल सकते हैं। Furthermore, the chemicals used in, moreover करते हैं furthermore को दोस्तों। The chemicals which are used in which are used in mining processes can contaminate soil and can cause harm to the soil and water, endangering, you know, endangering plant and nice. और किस लाइन में आया था? This can lead to loss of fertile soil. This can lead to loss of fertile soil. This can cause degradation, harm के सिनोनिम्स क्या होते हैं दोस्तों? पूछते हैं। सही में भाई, एआई ने कितनी वो कर दिया हमारी जिंदगी, हमें सोचना भी नहीं पड़ता आजकल तो। डैमेज, हर्ट, डेट्रीमेंट, ओ डिटीरियोरेट लिखते हैं, चलो छोड़ो इन सबको। दिस कैन कॉज डिटीरियोरेशन। स्पेलिंग सही है ना? होता है क्या ये शब्द एग्जिस्ट करता है क्या, या मैंने खुद बना दिया? हाँ एग्जिस्ट करता है। Of fertile soil which is crucial for plant. कहाँ था? बस 2 लाइन था दोस्तों। ठीक है, डन करते हैं हम इसको। डन तो नहीं, फोटोज लगानी है, मन नहीं कर रहा। और
बस यही था। इस पे अंडरलाइन क्यों है? पता नहीं क्यों है, छोड़ो। दोस्तों फोटो सर्च करते हैं। कॉपी इमेज, सेंटर, माइनिंग, कॉपी इमेज। अच्छा आसान है ये तो, इतना मुश्किल नहीं है ड्रामा। कॉपी, यहीं पे साइड में पेस्ट। पेज अब डिलीट करना पड़ेगा। छुट्टा, पे, अच्छा भैया। यस, दोस्तों ये हो चुका है दोस्तों। विटायर डिस्ट्रक्शन डेजर्टिफिकेशन की डाल देते हैं। वैसे ही मैंने शेयर कर भी रखी है ना ओबीएस डिस्प्ले कैप्चर। अफ्रीका क्यों आ गया है? डेजर्टिफिकेशन इन अफ्रीका। छोटी हो जा, छोटी हो जा, सेंटर हो जा। इसी को डाल देते हैं। ऐसे मिटिगेशन क्या होता है मुझे अभी तक नहीं पता। Process of reducing harmful effects of something. जो इसको सकते हैं।
ये डालते हैं। ये गूगल मैप्स मैप्स के पे क्यों है बस, ऐसे नहीं दिखा सकते क्या तला। मास्टर को बनता है कंक्लूजन प्लानिंग का सस्टेनेबिलिटी फोटो बनते हैं। Sex by sex। मैं जेंसी क्यों बनता जा रहा हूँ, मुझे नहीं बनना, मतलब हूँ मैं तो बनना नहीं है। क्रेजी बन गया असाइनमेंट तो सही में। Isoverbs। किताब लिख सकता है या तो सही में पूरी की पूरी। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट नहीं सेव ही करना होता है इसमें। नाम क्या रखें, दोस्तों मुझे अपना व्हाट्सएप खोलना तो एक बार स्ट्रिक स्क्रीन हाइड करता हूँ दोस्तों, सॉरी। दोस्तों नाटक सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें पता है कॉपीराइट आ जाता है। भूल गया था मैं, स्ट्रीम भी चल रही है। क्या करना था मुझे, व्हाट्सएप खोलना था। ओके Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. दोस्तों एक चीज रह गई दोस्त, असाइनमेंट का टॉपिक नहीं लिखा।
wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13. Working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.
and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far, play you guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, orbit when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. ये साइन है ना दोस्तों, अपलोड करने पर डबल चेक करते हैं, दिखा भी देता हूँ अरे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिखी, व्हाट्सएप तो बिल्कुल दिख। It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. दोस्तों 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 क्या करना है तो मेरा गेम ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं कॉइन्स, ठीक है। क्राउन क्राउन दिखाता हूँ, क्राउन दिखाता हूँ, क्राउन क्राउन से हम क्या पूछेंगे, पूछेंगे हिस्ट्री, देख हम पूछेंगे, चलो दिख ही गई,
टॉस कॉइन। तो पहले हम टॉस करेंगे कि क्या हम करेंगे, पहले हम टॉस करेंगे कि हेड्स किसको दें। अगर हेड्स आया तो हम हेड देंगे गेम खेलने को, ठीक है। और हम सोने को देंगे टेल्स। तो हेड करते हैं। हेड्स आया तो दोस्तों हम हेड देंगे गेम खेलने को, ठीक है। और अब एक और करते हैं कि पढ़ाई, पढ़ाई को भी हम इक्वेशन में डालते हैं। तो कैसे डालें, तो अगर हेड्स आया तो हम डालेंगे इक्वेशन। दोस्तों हेड्स डालना ही पड़ेगा। तो अब अगर, तो पहले हम करते हैं सोना और पढ़ने का। हेड्स आया तो मैं सोऊंगा, टेल्स आया तो मैं पढ़ूंगा। दोस्तों टेल्स आ चुका है तो सोना इज आउट ऑफ इक्वेशन। अब हम पढ़ करेंगे गेम खेलना या फिर पढ़ना। टेल्स फॉर पढ़ाई, हेड्स फॉर गेम्स। दोस्तों टेल्स आ चुका है। दोस्तों टेल्स आ चुका है। हाँ, हाँ, दोस्तों टेल्स आ चुका है। ये दुख की बात नहीं है, काफी खुश हूँ मैं जिंदगी में पढ़ सकता हूँ। लकी हूँ मैं, अफ्रीका में बच्चों को पढ़ने को नहीं मिलता। एड बैंकिंग, पॉइंटर्स हो गया, एरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया। क्या स्ट्रिंग्स पे ही था दोस्तों, पर ये दिमाग नहीं चल रहा ये करने का। अरे ना स्ट्रक्चर से पूछ गया। हाँ, स्टूडेंट फाइल 8:20, 8:30, 9:30, 10:30, मतलब बेसिकली 2 घंटे का रहता है। इसको हम कल करते हैं। पर दोस्तों पढ़ाई आई तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो हम ये करते हैं। टैब शेयर करने दो, टैब शेयर कर दो, विंडो कैप्चर, कैप्चर। अरे दिखाना, पेरा क्यों नहीं दिखा रहा क्या। तो हम ये पढ़ेंगे दोस्तों CS50। इतना करना, इतना कैसे नहीं होता। attacks and broad further. Good course, good course, good course. वैसे ये बैन तो नहीं बढ़वाएगी मुझे, यूट्यूब पर स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं इसको। क्रेजी टाइप लेवल पहुंच चुका हूँ। 3 लेक्चर है इसमें। their inputs and what their outputs are. So for instance, under standardIO.h, you can actually go to that website. You can go to a URL like this, where standardIO.h is in there, and you can actually see the documentation therefore. So let me go ahead and do this. I'm going to go ahead in my browser here. I'm going to go to manual.cs50.io, and let me go ahead here and select those functions that are frequently used in CS50. And under standardIO.h, you'll see a bunch of functions, only one of which we've even discussed, called printf.
I'm going to click on printf there, and you'll see an interface that at first glance might be a little overwhelming, but it's going to start to look more and more familiar. So first of all, you'll see that if you want to use printf under synopsis, you need to include this header file. Like you literally copy and paste that line into your own code. You'll also see this, which for now is a bit arcane, but this is kind of a hint as to what the function is going to look like. But more on that soon. But more importantly, you can read a description about it. And because these descriptions, when you're in less comfortable mode, are written by me and the course's teaching fellows, teaching assistants, and course assistants, you'll find them to be much more in layperson's terms. And so long story short, rely on this site when you want to learn how to use some function and also what other functions exist. In fact, if I go back to the main page here, you'll see that there are all of these functions like are frequently used in CS50, and there's hundreds more that come with C. But learning a programming language is not about learning all of those, but rather just getting a sense of where you find answers to questions when you do want to try something new. But what is important to know for CS50 today is that we have our own header file called cs50.h, which has functions that we have written just to make life easier in the first few weeks of the class. These are training wheels that will eventually take off. But it turns out in C, especially if you've programmed before, it's actually really hard and annoying just to get input from users, to get them to type a word or a number or something else. Like C does not make this easy, in part because it's one of the earliest languages that wasn't zeros and ones. So you have to do a lot of the heavy lifting yourself. But we'll put on these training wheels today and for a few weeks so that we can focus really on the intellectually interesting ideas of C and programming without getting bogged down in certain weeds that we will come back to before long. So for instance, CS50's own documentation is there at that URL. But within the library are these functions. A function called getString to get a string of text. String is a synonym for just text in a programming language. So getString will prompt the human for a string of text. GetInt is shorthand for getInteger if you want to get a number from the user. GetFloat is a little more arcane. Get a floating point number, like a real number with a decimal point in it. And ... there are others as well. So this is to say, within CS50, we've got some user-friendly functions via which we can actually get some input. And let's go ahead and use one of these, for instance, getString. Because recall that last week, our second program in Scratch was this one here, where we didn't just say hello world, we said hello David, or hello Carter, hello Yulia, whoever it was typing their name in. But to do that, we needed this ask block in Scratch, and then we use the say block, and then we use the join block to kind of make all of this work. So let's translate this program now into C, because it's a little more interesting and representative of the kind of code we'll start to write. But we need a slightly different mental model. Still have a function here, which is the implementation in code of an algorithm. We still have some inputs called arguments. But previously, I said that the say block and in turn printf have side effects, which is just something visually, typically, that happens on the screen. Other functions actually have what we called last week return values. And this is kind of analogous to a function, maybe doing something for you, writing down the answer on a slip of paper, and then handing you, the programmer, the slip of paper to do whatever you want with it without just broadcasting it to the world with like a speech bubble on the screen. So a return value is germane for a program like this because recall, when we used the ask block and I typed in my name, where did my name end up initially? It didn't go on the screen yet. Where did it end up? In an answer puzzle piece. And that special oval puzzle piece I claimed at the time represents a return value. So the sort of metaphorical piece of paper that the answer is written down on so that I can then use it later. So that's what we want to get to now in C, a return value that I can then do anything I want, whether it's print it to the screen, change it in some way, save it in a database, or anything else. So here, for instance, is what we did with Scratch. The input to the say block, or the ask block, was what's your name, quote unquote. The function, of course, is the ask function. And the return value was answer. If we now consider how we might translate this to C, it's going to look a little weird at first, but it's going to follow a pattern. Today, next week, the week after, anytime we do code like this. So getString, I claim, is going to be the most analogous function in C to the ask block. And to be clear, this is a CS50 specific thing, training wheels of sorts, but we'll show you in a few weeks what this function is doing and how you cannot use it moving forward once you're comfortable with the language itself. Notice I put parentheses left and right as sort of a placeholder for user input, and that user input is going to be what's your name. But I can't just put what's your name in parentheses. What do I minimally need to add in there too? Yeah, so the double quotes left and right. So let me go ahead and add those in. I left a space here, not for a new line. I could move the cursor to the next line, but I minimally at least want to move the cursor at least one space over, just so it looks pretty, so that when I'm prompted for my name, there's a space between the question and my answer. But it could also be \n. That's just an aesthetic choice on my part. But what do I do with the answer that comes back from getString? This is where the text is going to look different today. In C, you start to use an equal sign from left to right, respectively. And on the left, you put the name of the variable in which you want to store that return value. So a return value is kind of a conceptual thing. You can do with it what you want. And if I want to store it longer term in a variable, like x or y or z in math class, I can just give it a name here, x or y or z, or more reasonably, answer, or any other English word. No spaces, generally lowercase, same heuristics as before. But this means now, ask the user what's their name. Whatever they type in, go ahead and store it from right to left in this variable called answer. But C is not done with us yet. If you've learned Python or certain other languages, you'd kind of be done writing code at this point. In C, though, you additionally have to tell the compiler what type of variable you want to use. So if it's a string of text, you say string. If it's an integer, a number, you say int, as we might have seen before. So it's a little more pedantic. It's more annoying, frankly. The more onus on you and me, the programmers. But this just helps the compiler know how to store it in the computer's memory. And I'm so close to being done with this line of code, but what's missing?
So semicolon. And mark my words, if you've never programmed before, sometime this week, this semester, you will forget a semicolon. You will like raise your hand. You'll get frustrated because you can't understand why your code's not working. You will run into stupid issues like that, but do take faith that they are stupid issues. It doesn't mean it's not clicking for you or you're not a programmer. It just takes time to see these things if it's a new language to you. So there now is my semicolon. All right, let's go ahead then and do something with that return value using the second of the big puzzle pieces in Scratch. So when I wanted to say hello, comma, and maybe some other languages some of you have learned, but C is a little bit different, and the closest analog to this Scratch solution is going to look like this. I still use printf, because printf is the equivalent of say. Inside of my parentheses, I'm going to go ahead and say, weirdly, hello, comma, %s. So there's no real analog in C of join. Instead, there's a way to specially format text using printf, hence the F in printf. And what you do in printf is you type whatever English word or human words that you want. You then use %s as a placeholder. If you want a string of text to be added to your own text, you literally write %s. And let me anticipate a question from the crowd. How do you print out %s? There's a solution to that, too, if you literally ever want to print out %s. But it's deliberately a weird choice of characters so that the probability that we ever need to type this ourselves is just low, that no one really worries too much about it. All right, but that's not quite enough. In addition to saying hello, comma, space, placeholder, %s, and just for vocabulary's sake, that's a format code. Again, format being the F in printf. I still need my double quotes around the whole thing. In this case, to match my previous program, I am going to go ahead and add the \n to move the cursor to the next line. And now I've left a crazy amount of room here, but that's deliberate. Does anyone have an instinct for what I'm probably going to want to add after the quotes, but still inside of the parentheses? So answer itself. I need to somehow tell printf with a second input, otherwise known as an argument, what I want to substitute for that %s. And so I put a comma and then the name of the variable that I want printf to figure out how to plug in here. So honestly, it's a little annoying, and this is kind of a dated approach. Like newer, more modern languages, like we'll see later in the course, Python and JavaScript actually have much more user-friendly ways of doing it. But once you wrap your mind around the heuristics, the rules here, it's just formatting a string by plugging in whatever you want into this format string, so to speak. And again, the comma here is important. This signifies that it takes one input at left and a second input at right. But notice this comma. There's technically two commas, but I'm not claiming that this function takes 3 inputs. Why? This comma I'm pointing out doesn't mean the same. It's because that comma is part of the quotation marks and it's then part of like the string. Exactly. This comma that I'm pointing to is part of the quotation marks and therefore part of my string of English text. So this is just English grammar. This is sort of C syntax. And again, these are the sort of annoying little details that we're using the same symbol for different things, but context matters. So just stare at your code, look carefully left to right, and generally the answer will pop out. No pun intended. OK, questions now on this syntax before we actually write it and run it? Yeah? Why is the \n not after the answer? So the way functions work, including printf, is that you pass to them one argument inside of the parentheses. And then if you have a second argument, you put it after this comma here. But the way printf works is that its first argument is always a string that you want to be formatted for you. So anything you want printed on the screen has to go in those quotes. And you can perhaps extrapolate from this. If I actually wanted to say multiple things in this sentence, so hello, maybe first name, last name, I could actually do hello, comma, %s, space, %s, if I had 2 variables, one called first name, one called last name. But then I would need another comma for a third input to the function. And so it's very general purpose in that sense. Questions? Yeah? OK, so can you abstract away the format string itself, hello, comma, answer? Short answer, yes, but not nearly as easily in C as you can in other languages. So that's why we're keeping it simple for now. But you're going to love something like Python or JavaScript, where a lot of this complexity goes away. But you'll see also in Python and JavaScript and other languages, they still are inspired by syntax like this. So just understanding it now will be useful for multiple languages down the line. All right, so let's actually do something with this code rather than just talk about what it might be doing for us. Let me go over to, for
दोस्तों कितनी स्ट्रीम होगी भाई, टाइम डेट घंटे की होगी, ये जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। Instance VS Code again, and I'm going to go ahead now and remove this middle line of printf. I'm still in my same file called hello.c. I'm going to clear my terminal window just to eliminate distraction, and to do that I can literally type clear, but this is just for aesthetic's sake. That's not functionally that useful. Or you can hit Control-L to achieve the same on your keyboard. But I'm going to go back to line 5 here where I previously just said hello, comma, world, and I'm going to do this instead. I'm going to give myself a variable called string. I'm going to give myself a variable called answer, the type of which is string. I'm going to set it equal to whatever the return value is of getString, asking an English question, what's your name, question mark, with just a single space, just move the cursor over, followed by a semicolon. Then I'm going to go ahead and say printf, quote unquote, hello, comma, placeholder, \n, close quote, comma, and then what goes here again? This is where answer goes. And then I just need to semicolon on the right of that. But I think now that I'm done. But let me point out a couple of details. This got very colorful, very pretty quickly, and it's not like the black and white code I had on the screen a moment ago. This is because what programs like VS Code do for us is it pretty prints, or rather it syntax highlights our code for us. So syntax highlighting means just add some colors to the code so that different ideas pop out. So you'll notice, for instance, that printf here, getString here are in purple because they represent functions, just like the say block. Here, what's your name, quote unquote, in VS Code is a light blue instead of white, but it's still going to be consistent if I use strings of text elsewhere as well. So I didn't type anything special. This isn't like Microsoft Word or Google Docs where I'm highlighting and changing colors of things. This is all happening automatically, but it's just Unicode text. It's just being interpreted automatically and having these colors applied so that things pop out more usefully visually. Now, I've unfortunately made a mistake, but I'm going to deliberately induce this one, because you too will probably make this mistake. I'm going to go ahead and run make hello again, because I've changed my code, so I have to regenerate the machine code from the new source code. But unfortunately, when I hit enter now, my God, the errors don't even fit on the screen. So let me make this bigger. I'm going to click the little caret symbol here just to make my terminal bigger for just a moment. And you'll see that there's like more lines of errors than there are of code that I actually wrote, often which is written pretty arcanely, again, for programmers who've been writing code for 10, 20 years. But there are some details that pop out. So notice the problem is definitely with hello.c. So great, it is my fault. This syntax here means that line 5 is the problem. And this next 5 means character 5. So you can literally like triangulate your bug, your mistake, by going to line 5 and then over 5, and it's somewhere in that area. Specifically, the area is use of undeclared identifier string. Did you mean standard in? I don't think I did. Like, I do want string, and then there's some other complexity here. But what's important here is not the specifics of this error, but really the implication that it doesn't recognize the word string or getString. Now, why might this be? Yeah? Exactly. Because we are using getString, which I claimed is a CS50 thing that we'll use for a few weeks, C does not know about it out of the box, so to speak. I have to teach the compiler that getString exists, just like I taught the compiler that printf exists, by including the appropriate header file. And in this case, quite simply, it's called include cs50.h. That now teaches the compiler, oh, someone else wrote this function already, getString, and with it this type of variable called string. So now if I go back to my terminal window and rerun the exact same command, make hello, maybe crossing my fingers, now nothing, in fact, goes wrong, because the compiler's been brought up to speed with all of the functionality it needs. And now if I do /hello, enter, there it is. What's my name? And notice the cursor's one space over, just because I thought that looked prettier than having the cursor right next to the question mark. DAVID as my input, and enter, and hello, comma, David. My questions on any of this code thus far? Questions on any of the code? No? All right, so let's introduce some other functionality into the mix. It turns out that there are other types of data, other types of variables in the world, not just strings, but indeed, per before, we have things called integers, int for short, floating point values, float for short, and a few others as well. So rather than only focus on string, let's get a little more interesting with numbers here and see what we can do with something like integers, again, int for short, by taking a look at not getString as before, but now how about getInt. And for this, I'm going to give us a few other tools in our toolkit. Those format codes, to which I alluded earlier, like %s, fortunately are pretty straightforward. And here is a list of most of the popular format codes that you might ever care about with printf. In particular, we saw %s for string, and you can perhaps guess which one we're going to use for integers. Yeah, so %i is what we're going to use for integers. And this is the kind of thing that you can consult in the manual pages or a slide like this. There's only a few of them that you might frequently use. But let's go ahead and use integers in a more interesting context, not just using functions, but let's revisit this idea of conditionals. And conditionals in Scratch were like these proverbial forks in the road. Like, do you want to do this thing or this other thing? It's a way of making decisions in a program, which is going to be super useful and pretty much omnipresent in any problems that we try to solve. So let me give you a few more building blocks in C by doing the side-by-side comparison again. So here in Scratch is how we might say if two variables, x and y, one is less than the other, then go ahead and say, quote unquote, x is less than y. So kind of a stupid program, but just to show you the basic syntax for Scratch, this is how you would ask the question. If x is less than y, then say this. So say is the function, if is the conditional, and the green thing here we called what? What do we call it? Yeah. A Boolean, or a Boolean expression, which is just a fancy way of saying a question whose answer is true or false, yes or no, 1 or 0, however you want to think about it. In C, the code's going to look like this. So it'll take a little bit of muscle memory to develop, but you're going to say if, then in parentheses, you're going to say x less than y, assuming x and y are variables. You're then going to use these curly braces, and then if you want to say, quote unquote, x is less than y, in C, what function should we use here? Presumably?
So printf, quote unquote, x is less than y. So it's a bit of a mouthful, but again, notice the pattern. Name of the function is printf. In the parentheses, left and right, is the argument to printf, which is, quote unquote, x is less than y. And again, just for aesthetics, to move the cursor to the next line, which you don't have to worry about in Scratch, because everything's in speech bubbles, we're adding a \n as well. So notice that these curly braces, as they're called, much like the orange puzzle piece here, are kind of like hugging the code like this. And I'll note that technically speaking in C, if you only have one line of code inside of your conditional, you can actually omit the curly braces altogether, and the code will still work. If you have one single line of code, why? Just saves people some keystrokes. If you have 2 lines, 3 lines, or more in there, you need the curly braces. But I'll always draw it with the curly braces in class so it resembles Scratch as closely as possible. As an aside, too, some of you who have programmed before, you might be cringing now because you really like your curly brace to be over here instead of here. Like that, too, is a stylistic choice, and we'll talk, too, about this in the class. Aesthetically, stylistically, there's certain decisions we can make, but generally in a class, in a company, you as a student or an employee would simply standardize on one set of rules, so to speak. So we'll use these rules for formatting our code in class consistently. All right, any questions on this snippet of C code? All right, a couple of others then. So here is how in Scratch we might have a two-way fork in the road. If x is less than y, say x is less than y, else say x is not less than y. In C, it's going to look pretty much the same, but notice I'm adding an else keyword here with another set of curly braces. I'm going to have a couple of more printfs, but in C, even though it's clearly keyboard-based, it's just text, no more puzzle pieces, it's kind of the same shape, so to speak, and it's definitely the same idea, so it's following a pattern. What about a three-way fork in the road? If x is less than y, then say x is less than y. Else, if x is greater than y, say x is greater than y. Else, if x equals y, then say x is equal to y. Well, you can probably see where this is going. On the right-hand side, it looks almost the same. In fact, if I add in the printfs, it's really almost the same, at least logically. But there is at least one curiosity. Seemingly a typo, but it's not this time. Yeah? Yeah. The double equal signs does not match Scratch, but it's not, in fact, a bug or a mistake in C. Anyone have an intuition for why I did use 2 equal signs instead of 1 here? Yeah? Exactly. Well, otherwise, it would be mistaken for a variable, specifically assignment of a variable. So recall that in previous code, when we used the getString function, we used an equal sign to assign from right to left the value of a variable. And that's a reasonable decision. Equal kind of means that the two should ultimately be equal, even though you think about it from going right to left. Unfortunately, the authors of C kind of painted themselves into a corner, and presumably decades ago, when they realized, oh, shoot, we've already used a single equal sign, how do we represent equality of 2 values? The answer they came up with was, all right, we'll just use 2 instead. And thus was born this decision. Is it the best one? Who knows? Crazy enough, in other languages like JavaScript, you have not just 1, but 2, but also 3 equal signs in a row to solve yet another problem. So reasonable people will disagree as to how good or bad these decisions are. But in C, this is what you must do. But there's a bad design decision here, too. It's still correct, the code, left and right. But I bet I could critique the quality of the design of both the Scratch code and the C code for reasons what? OK, no, really good intuition. Do we have to ask this third question, else if x equals y? So short answer, no, logically, right? Just based on arithmetic, either x is less than y, or x is greater than y, or what's the only other possible answer? They must be equal logically. So technically, you're just kind of wasting the computer's time by asking this question, because it already knows at that point the answer. And you're wasting your time as the programmer bothering to type out more code or more puzzle pieces than you need, because logically, one stems from the other. So I can tighten this up, get rid of the else if, just use an else, and I can do the same thing over here in C, thereby avoiding the double equal sign altogether. But not because it's wrong, but because you're wasting time. Because now you're potentially asking only 2 questions, 2 Boolean expressions, instead of 50% more by asking a total of 3 questions at most. Other questions then on this kind of code, logically or otherwise? No? All right, so if we have these puzzle pieces, so to speak, at our disposal, how can we go about actually using these? Well, suppose that we actually want to do something with values. Let's introduce variables in C as well. We saw an example using a string a moment ago, but what about with something like integers? Well, you might not have used this in Scratch, but here's the orange puzzle piece in Scratch via which you can create a variable called counter to count things, and you can set it equal to some value like 0. Now, you can perhaps guess where we're going with this. If I want in C a variable called counter, and I want to set it equal to 0, I use a single equal sign, because logically, you read it from right to left, or technically, it's executed from right to left. But that's not enough in C. What's missing from the screen? I need a what? So we need a data type, and if it's going to be an integer, indeed, I'm going to use int. And now the other mistake I keep making is so a semicolon at the end of the line. So it's a little more verbose than some languages, but if you read it left to right, this is how you tell C to give you a variable called counter of type int and initialize it to a value of 0. That's all. All right, how about in Scratch if you want to change that variable by 1, by adding 1 to it? In Scratch, it's super simple. You just change it by 1 or even -1 if you want to go up or down respectively. In C, it turns out you have a few different ways to do this. And this looks like it's not mathematically possible, but that's because equals is assignment, recall. So this line of code is not saying that counter equals counter plus 1, because that's just not possible using typical numbers. But this means take counter's value, add 1 to it, and assign it back to the counter variable. So it's like incrementing counter in this way. But this is such a common thing in C and in programming to increase or decrease the values of variables. There's a more succinct syntax. This is identical. And it might take a little practice to get used to it, but it just saves you some keystrokes. But it similarly adds 1 or whatever number you use there. And this is such a common operation in C especially that there's an even tighter way of executing the same idea. And you can literally just say counter plus plus.
and then semicolon in this case. All three are exactly the same. All three are perfectly correct. But you'll learn over time that typing less on the screen is probably going to save you some time. Meanwhile, if we wanted to do the opposite and do something like -1 in Scratch, we could similarly do --- in C. Or we could do, we could do --- in C here at right. All right, so just some additional building blocks translating from Scratch to C. Why don't we go ahead and try using this perhaps in the following way? Let me go ahead and go back to VS Code. And let me propose that we do something like this. In VS Code, I'm going to go ahead and clear my terminal window. I'm going to close hello.c by just clicking the X. I'm going to go ahead and create a new file called compare.c, because the purpose in life of this program is going to be to compare integers on the screen. This time, I'm not going to mess up. I'm going to preemptively include cs50.h. I'm going to preemptively include standardio.h. And here, too, is a very common mistake in learning C. It is not studio.h. So when you email us asking why studio.h is not working, that's because that is not the word. It is standardio.h, meaning standard input and output, stuff involving the screen and the keyboard. Then I'm going to go ahead and, just as before, int main void. But we'll come back to that eventually as to what it means. And now inside of main, which is just where the main part of my program goes, again, you can think of this as being analogous to when green flag clicked. This just kicks everything off. I'm going to go ahead and do two things. I'm going to go ahead and get an integer called x, and I'm going to prompt the user for that int and just say something like, what's x question mark space. Then I'm going to do int y equals get int, quote unquote, what's y question mark space. And then let's just do something simple, like if x is less than y, then go ahead and print out, quote unquote, x is less than y, \n, close quote, semicolon. So it's not a very deep program. It's just going to do what most any human brain could do pretty quickly. But it's at least demonstrating how we might use now something like a conditional in code. So let me go ahead and let me compile this code for the first time, make compare, enter. Nothing bad happens, which is good. /compare is how I run the program. And just to tease this apart, dot, as we'll soon see, essentially means that the file is in your current folder. So dot means in your current folder. And we'll eventually see that dot means your parent folder, like the one that contains wherever I am on my computer's hard drive. All right, /compare, what's x? 1, 2 for y. And hopefully it should say that x is less than y. So pretty straightforward, proof by example. And hopefully this would work in other cases too. But if I flip that around and I rerun it, /compare, and I do 2 and 1, nothing's going to happen. But you would expect that because there's only one Boolean expression deciding whether or not I should actually type this out. So what's going on? Well, if this helps you, you might find it useful to think about the logic of any program, be it in Scratch or C, as kind of a flow chart of sorts. And we'll put up a few of these over time, just in case you're a particularly visual thinker. And this represents what it is I just did. So here in this picture is where the program starts conceptually. And anytime you see a diamond, think of that as a Boolean expression, a question that's being asked. And the question being asked is x less than y? That has two possible answers, true or false, yes or no, respectively. So let me propose per the arrow that if the answer is true, then print out per this rectangle, x is less than y, just quote unquote, and then stop. That's it for the program. But logically, if x is not less than y, that is that question's answer is false, we'll just skip right to the end and stop. So this is a control flow diagram. It's just a pictorial way that you could write on a piece of paper that just represents what it is the program is doing. And this gets a little more interesting if now we do something else with the code. For instance, instead of just concluding that it's less than one or the other, let's go back to the code here. Let me clear my terminal window, and let me add an else. So else, go ahead and print out x. I don't think I want to say this, greater than y. It's not quite right. What would be reasonable to say here? Yeah, subtle, but x is not less than y, because it could be equal. We don't know if we're only checking two scenarios here. So if I recompile this, make compare, /compare. Now if I do 1, 2, I still get the same answer. If I rerun /compare 2, 1, I now get the opposite answer. It's not as good as might be ideal. It'd be nice to know if it's equal to or greater than, but at least that's all of the code that we have here. And just to now paint a picture, if I go back to my control flow diagram, my flow chart here, this is what it looked like before logically. Now that I've added in a second branch, so to speak, now if the answer is false, I first print out x is not less than y, and then I stop the program. So same idea, but the decision tree, if you will, if you take an ect10 or the like, is getting a little bit bigger now, conceptually. All right, what if we do something more than this? Let's actually have that third condition. Let me go back into my code here. I'm going to hide the terminal window just to make room for more code. And I'm going to say else if x is greater than y, then go ahead and say not x is not less than y, but rather x is greater than y. And then down here, I'll do an else if x equals y. Then I can go ahead and say printf x is equal to y, \n, close quote. All right, so now if I run it, let me open my terminal window again. Let me rerun make compare. Let me rerun /compare. 1 and 2 are the same. Let me rerun it. 2 and 1 are the same. Let me rerun it a third time. 1 and 1. Terminal window again. Let me rerun make compare. Let me rerun /compare. 1 and 2 are the same. Let me rerun it. 2 and 1 are the same. Let me rerun it a third time. 1 and 1 are now, in fact, equal. So this works correctly, but why did I make a point of using these else ifs? Put another way, couldn't I just make my life a little simpler and just say, if this, then that, if this, then that, if this, then that? Just ask all three questions. Keep the code simple. Don't bother with these else's. Would this work for me? Yeah.
Yeah, so it saves a little bit of time because in this case, just like in English, this is like asking 3 separate questions. And it's not harnessing any information from previous questions in order to decide whether you should bother asking that other question. In other words, if x is less than y, and you already figured that out because it's 1 and 2 respectively, you're going to print this. Why would you waste time asking this question when it's not going to be true? Why would you waste time asking this question when it's not going to be true? And so the point I wanted to make here, which is that if we visualize that particular design, what the flowchart looks like is actually this. And let me zoom in at the top. If you ask the question, is x less than y? Well, you're going to go ahead and say x less than y. Then if you go down to the next question, you're still going to ask, is x greater than y? And then below that, you're still going to ask, is x equal to y? So no matter what x and y are, you're asking 1, 2, 3 questions all of the time. But if we actually go in and do what we did the first time, where if I go back to my code and I undo this edit and add back the else ifs, and now let me go back to the flowchart, which I claim is bad because it's 1, 2, 3 questions, 1 or 2 of which might not be necessary. Now if I visualize what I just did, the flowchart gets a little more complicated looking, but it's going to be better designed, more efficient. Why? Well, because if I start at the top here, I ask one question, is x less than y? If the answer is true, OK, I say x less than y, and then boom, I sort of cheat and go all the way to the end of the program and stop, having asked only one question. If, though, x is not less than y, OK, fine, I'll ask you a second question. But if the answer is true, boom, I print out x is greater than y, and then I stop. And only in a perverse case where x actually equals y, which I'm going to claim is very unlikely or infrequent, only then am I going to ask 1, 2, 3 questions to figure out whether or not to print something at all. So this is what we mean by distinguishing between correctness of code, because it's still correct, but this version is better designed, because hopefully you're going to go down this branch or this branch rather than the longest one frequently. Any questions now about this code or this visualization thereof? Yeah? A perfect segue. Why did I bother, though, even asking this question? Don't need to, because when I hit this button, hopefully I have the right slide in place, this would be even better than that design. So thank you for teeing that up. This is the same picture. It sort of got bigger because there's fewer nodes, fewer shapes in the picture. Notice that if x less than y, boom, we say as much and we stop. If x is not less than y, but it's greater than y, boom, we stop. Or if it's not greater than, we immediately conclude x indeed is equal to y, and again, we stop. So this picture is about as efficient and as well designed as we can make our logic. That's about as good as we can solve this problem. So if I go back to my code now to make my C code match that, the only thing I need to do is stop wasting the computer's time. Don't ask that third question. Just logically, mathematically conclude that, of course, it's going to be equal at that point in the story. All right, any other questions on it? Sorry, a little louder? Really good question. What if I put in something that's not a number? So here, too, is where the CS50 library and the implementation of getInt will be your friend. So for instance, if I run /compare and I want to compare cats and dogs, I could type in cats, enter. It's just going to prompt me again and again. It's not going to let me type in dogs either. It's going to force me to give it an integer. C does not do that by default. And in fact, as we'll soon see over the course of CS50, C is actually a very dangerous language at the end of the day because it just trusts that the human is doing what it wants. And as such, a lot of today's software that is hacked in some ways, if it's using C or another language called C++, are actually very vulnerable to certain types of hacking, whereas other languages that we'll get to in the class are less so, for reasons like this. All right, so besides this, let's consider just one other data type. How about? So besides strings, besides chars, there's some others on this list here. दोस्तों एक घंटे के हो गए दोस्तों मुझे सोना पड़ेगा कल जिम जाना दोस्तों तो बस एंड करते हैं ज्यादा बाय बाय नहीं बोलूंगा मेरे में हिम्मत नहीं है क्रेजी बात है दोस्तों बाय